gonna discuss three personalities in this chapter, right? So this is your chapter 1, key question 1 according to the syllabus. So teen personalities that we are gonna discuss includes Shah Wali Ullah. I'm gonna start with the first personality. His name is Shah Wali Ullah. हर personality के बारे में we are gonna learn 3 to 4 things. We are gonna start with the biography part कि ये थे कौन, किस तरीके से, कहाँ पर पैदा हुए, थोड़ा सा जो कह लें आप रट्टे वाला पार्ट है, ठीक है. सो शाह वलीउल्लाह वाज born in 1703. अच्छा, अब an interesting thing to note here is that कि the year 1703 is significant because of the fact कि 4 साल बाद, just after 4 years, in 1707, औरंगजेब dies. औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर हियर. इसके पीछे एक वजह है. मैं आपसे क्यों ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जस्ट 4 साल बाद औरंगजेब डाइज. द रीजन इज दैट कि शाह वली उल्लाह सॉ, यू गाइज नीड टू आंसर. अगर शाह वली उल्लाह 4 साल पहले पैदा हुए, जस्ट 4 years बिफोर द डेथ ऑफ औरंगजेब, सो डिड ही सी द राइज ऑफ द मुगल्स और द फॉल ऑफ द मुगल्स? Fall of the Mughals, sir. Yes, absolutely. So he saw fall of the Mughals, and if he saw fall of the Mughals, अगर शाह वली उल्लाह ने मुगल्स का डाउनफॉल देखा, so अगर आप डाउनफॉल देखते हैं, so you don't have any expectations. ये अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर हम आएंगे. We will come to this in a while कि ये बात मैंने क्यों लिखी. Anyhow, let's continue. So he was born in 1703 and he died in 1762. अच्छा, 1762 is also important. The reason is that कि just 1 year after Battle of Panipat. Yes, after Battle of Panipat. और अभी मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा कि ये बैटल ऑफ पानीपत थी क्या. व्हाट हैपेंड इन द बैटल ऑफ पानीपत, वी विल स्टडी दैट इन अ व्हाइल. नाउ हिज रियल नेम, शाह वली उल्लाह का जो रियल नेम था, हिज रियल नेम वाज कुतुबुद्दीन. कुतुबुद्दीन. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल हमारे जहन में आना चाहिए कि व्हाई वाज ही नोन एज शाह वली उल्लाह. देखिए, शाह इज अ पर्शियन वर्ड, ठीक है. वली इज एन अरबिक वर्ड. वली उल्लाह मींस वली ऑफ अल्लाह और फ्रेंड ऑफ अल्लाह. शाह मींस lord, or you can say king, right? So it was basically his title. Wali means a pious person, right? So Shah Waliullah was his title. Why was he given this title? Because of his piety, because he led a simple life. बहुत सादा लाइफ उन्होंने गुजारी, तो उस वजह से उन्हें ये टाइटल मिला है, ठीक है. सो रियल नेम इज कुतुबुद्दीन. His father is an important person. Father's name is Shah Abdur Rahim. Shah Abdur Rahim, right? Now, why is this person important? Because इनके नाम पर, on his name, there was a madrasa that he established. So the father of Shah Waliullah, he established a madrasa. He established a madrasa. कहाँ पर एस्टेब्लिश किया था सर? तो उन्होंने मदरसा एस्टेब्लिश किया था इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, ठीक है. एंड जस्ट बाय द वे, शाह वलीउल्लाह वाज आल्सो बोर्न इन दिल्ली, ठीक है. इस मदरसे का नाम क्या था? दिस मदरसा वाज कॉल्ड मदरसा, इट वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह's फादर, मदरसा रहीमिया, राइट. इट वाज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द फाउंडर. तो ये शाह वलीउल्लाह का थोड़ा सा आपको फैमिली बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है. ही वाज बोर्न in 1703 and he was also born in which city? Born in Delhi, ठीक है. अच्छा, शाह वलीउल्लाह के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है, he was हाफिज अल कुरान. He was हाफिज अल कुरान and it is said that he became Hafiz al-Quran by the age of 7 years. And if someone is Hafiz al-Quran, it means that he is fluent, he is proficient in Arabic and Persian. अरबी और फारसी पर उबूर हासिल था शाह वलीउल्लाह को, Arabic and Persian. So अच्छा, इनके कुछ बेटे भी थे.
कुछ नहीं बल्कि थोड़े ज्यादा ही थे, ठीक है, मे बी इट वॉज हिज हॉबी. So he had some historians say three, some historians says four, ठीक है. So he had four sons, Shah Abdul Qadir, Shah Abdul Ghani, Shah Abdul Qadir, ठीक है, Shah Abdul Qadir, etc. राइट. सो नाउ इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें सवाल क्या आता है, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर कैन आस्क, ठीक है. सो क्वेश्चन दैट कैन कम रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन, दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, द क्वेश्चन इज 4 मार्क में आएगा, हु वाज शाह वली उल्लाह. दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 4 मार्क्स, हु वाज शाह वली उल्लाह. This is for 4 marks, right? And you need to write any 4 facts. You don't need to write anything else. मतलब ज्यादा मत लिखिएगा. You don't need to elaborate. You need to do nothing. Just simply any 4 facts from above. ठीक है. So for instance, you could write his real name was Kutubuddin, 1 mark. His father was Shahdur, 2 mark. Born in Delhi, 3rd mark. Hafizul Quran, 4 mark. So like that, ठीक है. Just need to produce any 4 facts. ठीक है. अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फैक्ट्स. फैक्ट्स का मतलब होता है दैट कैन बी वेरीफाइड, हिस्टोरिकली वेरीफाइड, राइट. अब अगर आपने लिख दिया शाह वली उल्लाह फेवरेट डिश वाज बिरयानी, come on, that's not a fact, right? So historically it should be historically proven. या बहुत सारे बच्चे अक्सर ये करते हैं कि they write Shah Wali Ullah was a very good, very excellent, superb. Please don't use adjectives. Never use adjectives in 4 marker question, ठीक है. So never use adjectives. ये आपका गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है और बच्चा लंबी कर रहा है, ठीक है. सो प्लीज डोंट डू दैट. So it was his biography. I guess it's pretty simple. The next thing that we are going to learn about Shah Wali Ullah is that शाह वली उल्लाह की बिलीव्स क्या थे. नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस चीज का जिक्र किया कि नाउ सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड. He was born at a time when the Mughals were in decline. So automatically उनके जो बिलीव्स थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा जो है ना वो शेप हुए. शाह वली उल्लाह's first belief was that the Mughals are too weak. They cannot do anything for the betterment of the Muslims, right? So the first belief of Shah Wali Ullah is that the weak Mughal leadership, first belief, weak Mughal leadership, weak Mughal leadership cannot bring any reform. ठीक है. रिफॉर्म का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिफॉर्म. रिफॉर्म का मतलब होता है certain things that uplift a community, things or actions that uplift a community, that uplift a community. ठीक है. तो शाह वली उल्लाह ने बोला, he said he believed that weak Mughal leadership cannot bring any reform for the betterment of the Muslims. This was his first belief. ठीक है. weak Mughal leadership cannot bring any reform for Muslim betterment. अब सवाल ये होता है कि सर अगर एक बंदा ये कह रहा है कि वीक मुगल लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती, तो उसने ये भी तो कुछ सोचा होगा कि ये रिफॉर्म कहाँ से आना चाहिए. सो ही थॉट दैट सिंस वीक मुगल लीडरशिप कैन नॉट डू एनीथिंग, सो द रिफॉर्म, he believed that the reform should come, from within the community. कम्युनिटी से आना चाहिए, ठीक है. कम्युनिटी को खुद को कुछ करना पड़ेगा, कम्युनिटी को खुद को कुछ करना पड़ेगा. मींस ही बिलीव दैट द लोकल मुस्लिम्स शुड स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर रिवाइवल. सही है. सो दिस वाज हिज फर्स्ट बिलीफ. सेकंड बिलीफ, he believed that Muslims have partial knowledge of Quran. What is meant by partial? Partial means incomplete. शाह वली उल्लाह का सेकंड बिलीफ ये था, Muslims had partial knowledge about Quran, and Islam. ठीक है. शाह वली उल्लाह का ये मानना था कि मुसलमान जो हैं उनके पास कुरान और दीन की, इस्लाम की
सही तालीम नहीं है, राइट, एंड ही वांटेड टू मेक कुरानिक टीचिंग्स एक्सेसिबल, ठीक है, ही वांटेड टू मेक कुरानिक टीचिंग्स एक्सेसिबल, दिस वाज अ सेकंड बिलीफ, कुरानिक टीचिंग्स एक्सेसिबल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पता है क्या होता है, जब फिजिकली स्पेशली जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, किड्स गेट वेरी एक्साइटेड एंड दे आस्क, नो सर वी डोंट बिलीव दिस बिकॉज नॉट ऑल द मुस्लिम्स हैड incomplete, we know that there were some Muslims who were very knowledgeable and had complete knowledge। तो बेटा आपसे एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर mark this point, examiner in exam, you will not need to, you will not need to evaluate this, आपको ये नहीं पूछेगा, evaluate का मतलब कि राइट और रॉन्ग बताएं, ठीक है। सो डोंट डू दैट, दैट्स नॉट मीनिंगफुल फॉर आर ओ लेवल पीएचडी, ठीक है। तो हमें बस ये पता होना चाहिए, वी नीड टू नो व्हाट वर हिज बिलीव्स, ठीक है। हाँ, फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग वी कैन इवैल्यूएट, जैसा कि अभी आई टोल्ड यू अबाउट दिस सेकंड बिलीफ कि नहीं ऐसा नहीं था, बहुत सारे मुस्लिम्स वर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ कुरानिक एंड हदीस नॉलेज। सो यू नो यू डोंट नीड टू इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज अ सेकंड बिलीफ। लेट्स मूव टू हिज थर्ड बिलीफ। थर्ड बिलीफ शाह वली उल्लाह का ये था, every aspect of human life, every aspect of human life, every aspect of human life का मतलब जिंदगी का हर पहलू। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट एवरी एस्पेक्ट व्हाट डू वी, देखें एक इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल एस्पेक्ट, वी ऑल हैव फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ जॉब वी आर गोना डू, हमारे पेरेंट्स की क्या जॉब है, रिलीजियस एक्सपेक्ट होता है, इसी तरह वी हैव एक इंसान का पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है लाइफ का कि whether we support Imran Khan or anyone else, so on so forth. So Shah Wali Ullah said that every aspect of human life should be dealt in the light of, in the light of Quranic principles, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, फेक एग्जांपल है, बस समझाने के लिए कि फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट लेना सही है या गलत, सूद रिबा, इज इट हलाल और हराम। सो शाह वली उल्लाह विल से दैट यू नीड टू गो बैक टू द कुरानिक प्रिंसिपल्स, अगर कुरान में गलत कहा गया है तो दैट्स इट, गलत। गेटिंग माई पॉइंट। सो शाह वलीउल्लाह वांटेड कि इंसान की जिंदगी का हर पहलू should be dealt with Islamic principles. Before we move on, I will elaborate one more reason, one more belief of Shah Waliullah, and that was sectarianism was a root cause of all evils and a prominent reason for for the decline of the Muslims. Now the question arises कि सेक्टेरियनिज्म होता क्या है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सेक्टेरियनिज्म मींस, यहाँ पर सेक्टेरियनिज्म मींस टू गेट डिवाइडेड इनटू सेक्ट्स, सेक्टेरियनिज्म मींस टू गेट divided divided into sects, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल there are different sects in Islam, we know that there are more than 100 sects in Islam. For example, we have the two broader sects are the Shias and the Sunnis, and then we have further divisions, the Obandi, Barelvi, Ahl Tashif, and then the Aghani or the Bohri and the Alavis, etc etc, ठीक है। तो ये सारे sects हैं। शाह वली उल्लाह ने बोला कि सेक्टेरियनिज्म जब तक रहेगा इट विल डेफिनेटली कॉज डिसयूनिटी, एंड जब तक डिसयूनिटी रहेगी मुस्लिम्स विल रिमेन ऑलवेज इन डिक्लाइन। डज दैट मेक सेंस? सो दिस इज हाउ थिंग्स वर वर्किंग फॉर शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह के ये बिलीव्स थे। नाउ the third thing that we are going to learn about Shah Wali Ullah is that
कि शाह वली उल्लाह ने कारनामे क्या किए, व्हाट वर द वर्क्स ऑफ शाह वली उल्लाह। ठीक है। अच्छा, बिलीव से रिलेटेड द क्वेश्चन कैन मे बी कम लाइक, क्वेश्चन कुड बी डिस्क्राइब द beliefs of Shah Wali Ullah. ठीक है, for 4 marks, and you will need to write any 4 of his beliefs, that what he actually believed. All right, now works. What works did he do? हमने देखा शाह वली उल्लाह कैसे हालात में पैदा हुए. वी ट्राइड टू कॉन्टेक्चुअलाइज शाह वली उल्लाह, एंड देन वी लर्नड के what were his beliefs, and why his beliefs uh, got into the form in which they got. क्यों उनके beliefs ऐसे थे. अब इन जब एक शख्स किसी चीज पर बिलीव करता है ना, तो बेटा उसके अमाल भी वैसे होते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम बिलीव करते हैं अल्लाह एक है, तो हम अल्लाह के खुश करने के लिए उनकी नमाज पढ़ते हैं हम, ताकि वी कैन प्लीज अल्लाह. सिमिलरली जब एक इंसान ये मानता है कि वी आई नीड टू अचीव गुड ग्रेड्स, सो एक इंसान का काम क्या होगा, काम भी वैसा होगा, ही विल वर्क हार्ड. So similarly, based on these beliefs, Shah Waliullah conducted, performed some works, right? So we are going to discuss that कि Shah Waliullah के काम क्या थे. ठीक है, सबसे पहला काम, translated Quran. Shah Waliullah translated Quran into Persian. As क्यों किया उन्होंने ऐसा? As Muslims could not read Arabic. As Muslims could not read Arabic. ठीक है, मुसलमानों के लिए उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया पर्शियन में, बिकॉज इंडिया के मुसलमान वर फेमिलियर एंड फ्लुएंट इन पर्शियन, फारसी. दे डिड नॉट नो अरबी, दे डिड नॉट नो अरबिक, राइट? सो ये करने से हुआ क्या? दिस इंक्रीज्ड Quranic knowledge amongst Muslims. This increased Quranic knowledge amongst Muslims. ठीक है. So this was the importance of this work actually, and in fact there is another importance later. His sons, the sons of Shah Waliullah, translated Quran into Urdu, right? So this was his work. The work is कि उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया, and this is the significance of his work, right? कि मुसलमानों की नॉलेज में इजाफा हुआ, and his sons later on used this Persian translation to make an Urdu translation, right? So this was his first work. Next, Shah Waliullah wrote more than 51 books. He wrote more than 51 बुक्स. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताने वाला हूँ थोड़ी सी देर में. इनमें फॉर एग्जांपल इनकी मशहूर मशहूर जो किताबें हैं, दे कंप्राइज ऑफ हुज्जतुल बालिगा, हुज्जतुल बालिगा एंड इज़लतुल अख्फा, इज़लतुल अख्फा. ठीक है, ये इनकी मशहूर मशहूर किताबें हैं बेटा. Did you guys know that these books are still referred by Muslim scholars, and in the Harvard University, scholars are actually working on translation of this book into different languages, right? So these are very important books. He wrote more than 51 books. Okay. And what were the language of these books? So 23 of them were in Persian, and about I guess not 23, I guess they were about 28 or 30 in Persian, and then the remaining 23 to 24 in Arabic. Okay, so you don't need to remember the division, you need to remember this figure that he wrote more than 51 books, and you need to remember the examples के ये examples क्या थी. ठीक है, so इससे हुआ क्या? What was the use of this work? It helped to increase knowledge of the Muslims. It helped to increase the knowledge of the
मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। तो ये शाह वली उल्लाह का दूसरा काम था। नाउ थर्ड वर्क ऑफ शाह वली उल्लाह, शाह वली उल्लाह wrote a neutral account। अकाउंट मीन्स यहाँ पर अकाउंट कौन सा है, बैंक वाला नहीं, अकाउंट मीन्स आर्टिकल। ही रोट अ न्यूट्रल अकाउंट ऑन आर्टिकल on the four caliphs. Now a question is, what is meant by the term neutral? Neutral, यहाँ पर न्यूट्रल का क्या मतलब है? यहाँ पर बेटा न्यूट्रल का मतलब ये है कि इट वॉज एक्सेप्टेबल, इट वॉज एक्सेप्टेबल टू बोथ शियाज एंड सुन्नीस, टू बोथ शियाज एंड सुन्नीस। अच्छा, एक अच्छा बच्चा ये पॉइंट लिख लेता है। नाउ हम थोड़ा सा स्टेप आगे जाएंगे। कैसे आगे जाएंगे? इस आर्टिकल का नाम क्या था? नेम ऑफ दिस आर्टिकल, नेम, इट वाज खिलाफतुल, खिलाफतुल खुलफा, ठीक है। सो इट वाज द नेम ऑफ दिस आर्टिकल। सो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल? शिया सुन्नी डिवाइड खत्म हो गया, ठीक है। इट हेल्प टू, इट हेल्प टू मिनिमाइज, it helped to minimize the Shia Sunni divide, ठीक है। सो मैं आपको काम भी समझा रहा हूँ शाह वली उल्लाह के, उसके साथ उसकी अहमियत भी समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। दिस वाज हिज थर्ड वर्क। सो वी हैव लर्न कि शाह वली उल्लाह ने ट्रांसलेट किया, शाह वली उल्लाह ने किताबें लिखी, शाह वली उल्लाह ने he wrote also an article on the four caliphs which helped to unite Muslims, right? All right, next work. Now, as we all know that Aurangzeb was the last great Mughal emperor, and after the death of Aurangzeb, जो later Mughal successors थे, the successors of Aurangzeb were both weak, they were corrupt, they were busy in lavish practices. So, in order to warn them, उनको समझाने के लिए कि ये चीजें बंद करो, इस्लाम सादगी सिखाता है, इस्लाम teaches us piety. So Shah Waliullah warned, so he wrote, we will write it as, he wrote letters, he wrote letters to Mughal kings asking them, asking them to shun, shun का मतलब होता है खत्म करना, हटा देना, to shun lavish practices. And this is not just a theory. आपको पता है lavish practices मुगल्स की क्या थी? They were too luxurious. औरंगजेब की एग्जांपल ले लो, अगर लेविश प्रैक्टिसेस में, तो औरंगजेब में लेविश प्रैक्टिसेस में वी नो द पर्ल मॉस्क, he built this pearl mosque for private prayers, for private prayers, but we know कि by the time Shah Waliullah was born, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है, 4 साल बाद। तो औरंगजेब के सक्सेसर्स की लग्जरियस प्रैक्टिसेस, लेविश प्रैक्टिसेस क्या थी? औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे उनकी लेविश प्रैक्टिसेस में आता है ड्रिंकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ठीक है। They used to have so many concubines, etc., etc. So Shah Waliullah wrote letters to Mughal kings and asking them to give up all these bad habits, all these vices, and focus on running the empire. Now, uh, next work of Shah Waliullah was that he also urged farmers. शाह वलीउल्लाह ने गरीब जो किसान थे, गरीब जो फार्मर्स थे, उनको अर्ज किया कि आप मेहनत करें, यू शुड वर्क हार्ड, और बिजनेस करें अंडर द गाइडेंस ऑफ इस्लाम. सो ही टोल्ड the poor farmers, told the poor farmers to work hard and trade or transact as per इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ इस बात को कि हर कोई चाहता है कि वो रातों रात जो है ना वो रिच हो जाए, राइट? बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ,
नॉट एवरीवन इज दैट लकी। तो शाह वली उल्लाह ने फार्मर्स को ये बोला, यू शुड हैव पेशेंस, डोंट वरी अगर आपकी शिकायतें, अगर आपकी बातें, if the Mughals are not listening to you, you just keep working hard, and don't just you know fall for the worldly riches. आप मेहनत करते रहे और फेयर जो प्रिंसिपल्स हैं उस हिसाब से आप बिजनेस करें, उस हिसाब से ट्रेडिंग करें, उस हिसाब से सेलिंग बाइंग करें. So he wanted to inculcate Islamic principles हर किसी के अंदर, right? So this was another work of his. Now लास्ट वर्क ऑफ शाह वली उल्लाह जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर मी एटलीस्ट, आई आर्ग्यू, वाज दैट, आई मीन मैं तो हर वर्क को इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, इट इट आई मीन मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा फॉर यू गाइस which work is more important. All right, so the last work is that Shah Waliullah invited Ahmad Shah Abdali. He invited Ahmad Shah Abdali to defeat Marathas who were influencing Muslim culture, were influencing Muslim culture in the Battle of Panipat. In the Battle of Panipat. अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे. We'll try to understand के how things were working. अच्छा, देखें, पहली चीज ये समझ लें, पहली चीज, the first thing that you need to understand is here is that कि ये शख्स कौन है, who was अहमद शाह अब्दाली, right? So अहमद शाह अब्दाली, who was this person actually? ठीक है, सर जो मुगल्स के नॉट मुगल्स एक्चुअली. देखें, अहमद शाह अब्दाली के बारे में याद रखें कि ही वाज सर एन अफगान लीडर. ठीक है, ये अफगान लीडर था. कौन थे ये? अफगान लीडर था. इन्होंने ही इन्वेडेड इंडिया 9 टाइम्स. इन्वेडेड इंडिया 9 टाइम्स. और लास्ट टाइम कब आया? 1761 में. ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज अहमद शाह दुरानी. अहमद शाह दुरानी, राइट? एंड देर आर इनको बहुत सारे इनके टाइटल्स भी हैं, जैसे वन ऑफ द फेमस टाइटल ऑफ दुरे दुरान. दुरे दुरान विच मीन्स पर्ल ऑफ द पर्ल्स. ठीक है, ये सब इनके टाइटल्स थे. और ये इनके टाइटल था अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी के. इन्होंने 9 टाइम्स इन्वेड किया इंडिया, एंड ही डिफीटेड मराठास. ही डिफीटेड मराठास in the battle of Panipat. In the battle of Panipat. ठीक है, he defeated Marathas in the battle of Panipat 1761 में. So this is also a 4 marker. ठीक है, आपको अहमद शाह अब्दाली के ऊपर 4 मार्क में क्वेश्चन आता है कि who was अहमद शाह अब्दाली या who was अहमद शाह दुरानी for 4 marks, right? Now Shah Waliullah invited. The next question that arises in our mind is that कि invite कैसे किया? How Shah Waliullah invited? Through letters. उस जमाने में WhatsApp तो नहीं था. ठीक है, तो through letters. हम क्या लिखेंगे? Through letters he invited. अच्छा, अब अगली चीज हमारे जहन में ये आनी चाहिए, who were these Marathas? ठीक है, so we'll talk a bit on this community कि ये कौन थे. देखें, सबसे पहली बात that you need to remember about Marathas is that कि they were Hindu. By religion they were Hindu. The founder of the Marathan Empire, it is said he was Shivaji. ठीक है, and जिस तरह मुगल्स का सल्तनत, मुगल्स बादशाह सिस्टम था, इसी तरह मराठास का था पेशवाई सिस्टम. The leadership office of the Maratha was called the पेशवा और द पेशवाई सिस्टम. ठीक है, जब अहमद शाह अब्दाली आया, अहमद शाह अब्दाली, तो उस वक्त मराठास का लीडर था सदाशिव राव. सदाशिव
राव, ये बच्चों को नहीं पता होता, सो दैट्स अ यूनिक पॉइंट, ठीक है। एंड देयर कैपिटल, दे वर लोकेटेड, इंडिया में कहां पर लोकेटेड थे, लोकेटेड इन डेक्कन। सर ये डेक्कन कहां पर है, इंडिया की कौन सी साइड पर है, ये है सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। एंड इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, देयर कैपिटल वाज पूना, ठीक है। पूना भी कहते हैं, पुणे भी कहते हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है। अक्सर अगर आप में से किसी ने, इफ यू आर फेमिलियर विद दैट ड्रामा, यार थर्ड क्लास ड्रामा क्राइम पेट्रोल, उसमें पूना में हुई है वारदात, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। सो या, सो दीज वर द मराठास। नाउ द क्वेश्चन इज दैट शाह वलीउल्लाह को क्या हुआ, ऐसा क्या, मतलब क्या जरूरत पड़ गई कि ही इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली टू डिफीट द मराठास। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना राइट अबाउट द मराठास, आपको समझ आ जाएगी बात। ये जो मराठास थे, मैंने आपको क्या लिखवाया था यहाँ पर, बल्कि आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस, दे वर influencing Muslim culture, and as a fact, you know, Aurangzeb fought with the Marathas, with them for 25 years, and he could not defeat them, right? So Shah Waliullah saw that कि भाई मुस्लिम कल्चर को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, और सो वी नीड टू पुट डाउन मराठास, मराठास को कंट्रोल करने की जरूरत है, वी नीड टू कंट्रोल द मराठन इन्फ्लुएंस, एंड देयरफॉर ही इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अहमद शाह अब्दाली को बुलाने की क्या जरूरत थी, मुगल्स को नहीं बोल सकते थे। सो आई विल टेल यू कि आप याद करें, मुगल्स इस वक्त किस में है, फॉल में है, डिक्लाइन में है, द मुगल्स आर इन डिक्लाइन, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि मुगल्स आर इन डिक्लाइन, ठीक है, फॉल हो रहा है, तो मुगल से उनको कोई उम्मीद नहीं थी। एनी हाउ पानीपत की जंग होती है, पानीपत इज अ प्लेस इन इंडिया, एंड द मराठास गेट डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली in 1761, and this was Ahmad Shah Abdali's ninth invasion of India, and after that he never returned to India. ये तो वो हिस्ट्री है जो आपको पीएसटी में ए स्टार के लिए पता होनी चाहिए। नाउ एकेडमिक हिस्ट्री क्या है, देर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रूफ कि शाह वली उल्लाह ने अब्दाली को इनवाइट किया। द लेटर्स, जिसको हम ये लेटर्स कह रहे हैं ना, द लेटर्स, दीज आर अननेम्ड एंड अनडेटेड, किसके नाम लिखे गए हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी, सही है, लेकिन हम एग्जामिनर भाई साहब को खुश करने के लिए क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट दिस, ठीक है। सो दीज वर द वर्क्स ऑफ शाह वलीउल्लाह, हमने शाह वलीउल्लाह के काम देखे, एंड वी ऑल्सो ट्राई टू लर्न के शाह वलीउल्लाह के कामों की इम्पोर्टेंस क्या थी, हर काम की इम्पोर्टेंस हमने साथ साथ डिस्कस की। एंड देयर वर सर्टेन क्रिटिसिजम्स एज वेल, राइट, शाह वलीउल्लाह के ऊपर क्रिटिसिजम्स भी लगे। फॉर इंस्टेंस एक ये क्रिटिसिज्म लगा शाह वलीउल्लाह के ऊपर कि जो उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया है, यू नो, द उलेमास क्रिटिसाइज इट, उलेमास ने बोला कि कुरान को रिसाइट किया जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अरबिक के अंदर। सो शाह वलीउल्लाह के ऊपर ये एक ब्लेम लग गया कि आपने जो है ना वो कुरान की प्योरिटी के साथ समझौता किया, यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद द प्योरिटी ऑफ द कुरान। सो हिज वर्क वाज बोथ पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर जब हम वर्क्स पढ़ेंगे तो इट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हमें जो 14 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें आज तक एग्जामिनर सिर्फ ये पूछता है कि 3 पर्सनालिटीज जो इस चैप्टर में पढ़नी है उनके काम बताओ, बट ही कैन ऑल्सो आस्क इन अ 10 मार्क इन सेक्शन ए में, अगर आपको ये वाला चैप्टर कंपलसरी आ जाता है, हाउ सक्सेसफुल। सो हाउ सक्सेसफुल जब कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, सो दैट मीन्स, उसका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स दैट कि यू नीड टू गिव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, हाउ सक्सेसफुल या फिर असेस, ठीक है। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है सो फार रिलेटेड टू शाह वलीउल्लाह, सो प्लीज डू आस्क। अच्छा, इनका एक और क्रिटिसिज्म भी है, ये क्रिटिसिज्म है, हम इनकी तारीफ कर रहे हैं ना कि मराठास ने जो है ना वो यू नो, मराठास जो है ना वो उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ, तो उनके ऊपर बेटा एक क्रिटिसिज्म शाह वलीउल्लाह के ऊपर ये भी लगाया जाता है कि जनाब सरकार आली, ठीक है मराठास का इन्फ्लुएंस कम हुआ,
लेकिन बेटा मुगल्स की क्या इज्जत रही, मुगल्स की तो कुछ इज्जत नहीं रही। सब लोगों में ये मशहूर हो गया कि अब्दाली बाहर का रूलर आ रहा है, और उसने मुगल्स लॉस्ट देयर प्रेस्टीज। ठीक है, सो इनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर यू गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्लीज आस्क। अगर कोई पॉइंट रिपीट करवाना है या कोई चीज नहीं समझ आई है, प्लीज आस्क। नो सर। इज इट क्लियर? सो तो नहीं गए हो सब? सब जाग रहे हो? पक्की नहीं बात है? सर। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे जी सर। पढ़ाने में मजा आता है तो मुझे पता नहीं चलता ना अगला सामने वाला सो रहा है या जाग रहा है। अच्छा जी चले, विल स्टार्ट विद अनदर पर्सनालिटी। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है तो आई विल स्टॉप, काइंडली प्लीज रिजॉइन कर ले, ठीक है? वन मोर पर्सनालिटी वी आर गोना कवर।